वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह सीपीसी का पार्ट 4 है। जनरल वीडियो का पार्ट 37 है, स्पेशल मॉक सेशन। इस बार हम लोग बिहार जेईई के लिए फ्री मॉक इंटरव्यू करवा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पे इस लिखे हुए नंबर 9262810582 पर अपना नाम, बिहार जेईई इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर लिया जाएगा। आपके इंटरव्यू को फॉर्मल और इनफॉर्मल पार्ट दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। इनफॉर्मल पार्ट में आपने एलएलबी में क्यों एडमिशन लिया, आप जज क्यों बनना चाहते, ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर बच्चे लोग इनफॉर्मल पार्ट को इग्नोर कर देते, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपका कई बार इंटरव्यू इनफॉर्मल पार्ट में भी डिसाइड हो जाता है। फॉर्मल पार्ट से रेगुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी। अब आईपीसी कहना तो उचित नहीं होगा, बीएनएस आप कह सकते हैं, बीएसए कह सकते हैं। कॉन्स्टी, फैमिली लॉ, प्रोसीजरल, तमाम ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर्मल पार्ट से। सेकेंडली, हम लोगों के हिसाब से अगर आप हमारे पास मॉक के लिए आए, आप आंसर नहीं दे पा रहे और हम आपको आंसर नहीं बता रहे, आपको कह रहे कि आप जाइए ये पढ़ लीजिए, तो हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि फिर ऐसे मॉक का कोई फायदा नहीं है कि गो एंड स्टडी। कम से कम एक इंस्टीट्यूशन को जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है उसका आंसर, बेहतर आंसर क्या होगा, कैसे होगा, ये बताना चाहिए। तो हम लोग, अगर आपका आंसर सही नहीं है तो हर जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर भी, बेहतर आंसर बताते हैं। हम लोगों के पास प्रीवियस इंटरव्यूज में जो जो क्वेश्चन पूछे गए उनका कलेक्शन है। अगर आप इन सबको कर लें तो आपका इंटरव्यू काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज मॉक का स्पेशल मॉक भी शुरू किया है, जैसे एविडेंस एक्ट कंप्लीट हो गया, सीआरपीसी कंप्लीट हो गया, सीपीसी शायद आजकल में कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज ये, अगर मान लीजिए आप सीपीसी या सीआरपीसी रिवीजन के लिए बैठते हैं, मेंस में तो बच्चे लोग छोड़ देते कि एक ही क्वेश्चन आता है सीआरपीसी से, तो काफी लंबा ये सब्जेक्ट है, काफी समय लगता है। हम लोग 4-5 वीडियो में 2-2.5 घंटे में, कहने का मतलब कि 2-2.5 घंटे में आपकी पूरी सीआरपीसी कंप्लीट हो गई शुरू से लेके अंत तक। 2.5-3 घंटे में आपकी सीपीसी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। तो यह आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। और ये जैसे सीआरपीसी का पार्ट 5 है, सीपीसी का भी पार्ट 5 है, 3 पार्ट में एविडेंस एक्ट को कवर कर दिया गया है। बाकी सब्जेक्ट के भी हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो इन इंटरव्यूज को देखते हुए आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज करके जो आंसर बताया जा रहा है उस आंसर को भी नोट डाउन कर लेना है और मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसे अगर पॉसिबल है तो रिकॉर्ड भी करके देखिए कि आपने जो बोला उसमें कुछ मिस किया या सही बोला या नहीं बोला। इंटरव्यू में फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी इट मैटर्स हेवली। अगर आप इंटरव्यू के लिए यू नो द आंसर, दिस इज नॉट सफिशिएंट। मेंस और इंटरव्यू दोनों अलग अलग होता है। मेंस के लिए आपके पास समय है, कुछ भूल गए तो आप रुक सकते हैं, आप रिकॉल करके लिख सकते हैं, कुछ गलत हो गया तो काट के ठीक कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में आपके पास उसने समझने का टाइम नहीं होता, जो बोल दिया वो बोल दिया। अगर जवाब देने में आपको टाइम लग रहा है तो फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी काफ़ी अफेक्ट होती है उससे। तो इंटरव्यू की तैयारी कुछ अलग होती है, मेंस की तैयारी कुछ अलग होती है, दोनों तैयारियों को मिक्सअप नहीं कीजिए। तो आइए हम लोग ये वीडियो का ये पार्ट देखते हैं। स्टार्ट। द क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू एंड ऑन दिस वेरी बेसिस द टेस्ट ऑफ द जुडिकाटा
You see, the nature of work influences the personality of a man. अब जो हाई कोर्ट के जैसा आप पूछेंगे तो वो जो सवाल पूछेंगे या कोई लॉ प्रोफेसर सवाल पूछेंगे तो दोनों के वे ऑफ आंसरिंग और दोनों में काफी अंतर होगा, बहुत ज्यादा अंतर होगा। तो जैसा अब आपसे ये नहीं पूछने जा रहा कि रे जुडिकाटा क्या होता है, इट कैन ओनली बी आस्क्ड बाय ए लॉ प्रोफेसर। मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, वो कुछ उनमें से चीज है। अब जैसे आप बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे हो तो थोड़ा कोऑपरेट भी करता है, अच्छा चलिए रे जुडिकाटा पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है, व्हाट इज, तो ऐसे पूछ। लेकिन एनीवे, नाउ कमिंग बैक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैटर, अगर यही पूछा जाता है कि व्हाट इज मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, if this is the question, the answer is there are two types of matter directly and substantially in issue. Explanation 3 and 4 governs it. Explanation 3 is matter actively, directly and substantially in issue. And explanation 4 governs matter constructively in issue. So, though it appears that मैं ये टीचिंग है हल्का लिमिटेड टीचिंग, फुल लेंथ नहीं है, ओनली फॉर द पर्पसेज ऑफ इंटरव्यू, दिस इज नॉट द आंसर। मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको बोलना। यस सर। So, no matter can be directly and substantially in issue unless it is claimed in the former suit and denied by the claim in the former suit by one party and denied by the other party. It's not that universal definition of matter directly and substantially in issue. Only those matter which were directly and substantially in issue in previous suit. So how a matter can be directly and substantially in issue in previous suit? The test number 1 is that it has to be alleged by one party and denied by one party to make it issue. Secondly, on that basis, a relief is also claimed. If the relief is not claimed, matter is not directly in issue. It is also not substantially in issue. Claiming of the relief based upon those matters are must, unless the relief is claimed, it cannot be said that matter is directly and substantially in issue. This is one. Note भी करते चलना. Directly means I do not know ये limited teaching कैसा होता, I do not know, no idea about. नहीं सर, क्लियर कर रहा है कंसेप्ट। Directly means directly at once or immediately without any intervention. Directly means direct at once or immediately without any intervention. Yes sir. And substantially means essentially, materially, in a substantial matter.
Yes, sir. Directly brings certain element of definite certainty. लिखो, directly means element of definite certainty. बड़ा कौन सा है, डायरेक्टली या सब्सटेंशियली? बड़ा कौन सा? डायरेक्टली तो मैक्सिमम हो गया, सब्सटेंशियली लिटिल लेस देन सर्टेनिटी। बड़ा कौन होगा, डायरेक्टली या सब्सटेंशियली? सब्सटेंशियली मीन्स 100% नहीं, 90%, 95%। तो डायरेक्टली brings element of certainty and substantially brings little sort of certainty but substantially in issue। लिख लो, बहुत अच्छी लाइन है। Yes, sir. Directly. Directly means element of definite certainty Yes, sir. and little lesser is known as substantially। Substantially वाला होना चाहिए। नो, पहले डायरेक्टली होना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन सब्सटेंशियली ओके है, मतलब 90% तक है। आपकी प्रिपरेशन एकदम ओके है, मीन्स 100%। तो ऐसे लिखो, डायरेक्टली समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, डायरेक्टली मीन्स 100% एंड सब्सटेंशियली मीन्स मे बी 97-95%। ये वाला थोड़ा ठीक है। हाँ सर। लेकिन कैप करने के लिए। लेकिन वहां ऐसे नहीं बोल रहा है कि, हालांकि बोल सकते हो लाइटर मोड में, और लाइट ह्यूमर को बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता है लीगल सर्कल में, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। ह्यूमरस अंदाज में बोला जा सकता है, डायरेक्टली मीन्स 100% एंड सब्सटेंशियली मीन्स लेस देन 100, मे बी 97-95, लाइटर मोड में। तो इतना चलेगा दिमाग वहाँ? अरे खूब चलेगा दिमाग, क्यों नहीं चलेगा? दिमाग ऐसा है जिसे कहीं रोका ही नहीं जा सकता, अपने आप ही चलता रहता है, खूब अच्छे से चलेगा। We are only concerned with making our honest effort. We are only concerned with giving our 100%. The rest we do not know. Yes, sir. That is the only. Now coming back, मैं गपोड़ी बहुत ज्यादा हूँ। So a matter which is directly in issue, pleaded, alleged by one party, denied by other party. So this is actively in issue. This is what called explanation theory. Yes, sir. And constructively in issue ought to have been ground of attack or defense. Has not been so. So that also becomes substantially in issue. Now coming to explanation 5, refusal of the relief. So on that very limited issue on which the relief has been refused, that limited issue on which the relief has been refused may amount, क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन 5 में? मे अमाउंट रेज जुडिकाटा फॉर द पर्पसेज ऑफ, क्या लिखा जाए पढ़ना? Any relief claim in the claim which is not expressly granted by the decree shall, for the purposes of this section, be deemed to have been refused. हाँ, for the purposes of. So say some relief is now, for example, बहुत ही साधारण एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, बहुत ही, दिस एग्जाम्पल इज माई ओन क्रिएशन। आई हैव मेनी इलस्ट्रेशंस, चलते पहले से बना के नहीं रखे होते हैं, बस वैसे ही बना, पढ़ाते पढ़ाते अचानक से क्रिएट। फॉर एग्जाम्पल,
A files a suit for recovery of certain immovable property. He also claims mean profit. Decree for possession was passed, but mean profit was refused. A subsequently brings another suit seeking for mean profit. Whether the relief for mean profit was refused. In terms of explanation 5, whether subsequent suit for mean profit, A files another suit. He sought declaration to the effect that he is entitled to mean profit, and as a consequential relief, he further seeks that sum may be allowed to him, a decree may be passed on account of mean profit. Now the question is whether the subsequent suit is barred or not barred in terms of explanation 5. बिल्कुल क्लियर है, shall be deemed to have been refused for purposes of. तो second suit is barred. So Yes, sir. or A is seeking declaration that he is entitled to. Seeking declaration, that becomes matter substantially in issue. Seeking for mean profit, that becomes matter directly in issue. Now got it? Yes, sir. So, and on these basis, the test of res judicata was formulated. And test is not the identity of the subject matter, but the identity of the litigation. लिख लो, टेस्ट ऑफ res judicata is not the identical subject matter in both the suit. Test of res judicata is not the identical subject matter in both the suit. Identical subject matter in both the suit, but the true test is the identity of the title. Title means what right was litigated. Yes, sir. यहाँ लाल पेन से लिखो, टाइटल मीन्स व्हाट राइट वाज लिटिगेटेड. If what right was litigated, Yes, sir. if that very right was not litigated, obviously there shall be no decision. Or if that right was not litigated, obviously it was not a matter directly and substantially in issue. ये क्लियर है, ये एक दूसरे का एनालॉजिकल डिडक्शन है. Yes, sir. ये क्लियर है या डाउट है? जी सर, समझ में आ गया. तो रेस ज्यूडिकाटा के लिए मैटर कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू नहीं होना चाहिए. मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू. तो एक लिमिटेड टीचिंग, फुल टीचिंग तो समय नहीं हो सकता, लेकिन लिमिटेड टीचिंग फॉर द पर्पस इंटरव्यू के लिए मेंस ऐसा नहीं पढ़ना. इंटरव्यू में छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड रन शॉर्ट ऑफ द टाइम. उसे 10 मिनट में ही बहुत सारी चीजें पूछनी है, तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे एक ही टॉपिक में, बहुत सारा समय चला जाएगा. तो हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज दे आर हिटेड बाय लिमिटेशन ऑफ टाइम. शॉर्ट ही पूछेंगे. यही अगर मेंस का होता तो इसे काम नहीं चलता, वो सारा लिखना पड़ता.
But so far as interview, preparation of interview is totally different. आप केवल सेलेक्टेड एरिया जिनसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और हम लोगों के पास तो कलेक्शन है सारे पिछले इंटरव्यूज का कि क्या, और ये पूछा गया मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। डीजीएस में खूब पूछा जाता है, डीजीएस का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, बिहार में भी पूछा गया। And one must know if somebody talks of their judicata, तो 3, 4, 5 explanation, 3, 4, 5 explaining all this. So yes, yes Soma, for the purposes of de judicata, what is matter directly and substantially in issue? Sir, matter directly and substantially in issue would be those matters which has by a party in the form of proof and denied by the other party. And second, a relief must have been made with respect to the former suit in explanation of section 11. What is known as matter directly in issue? So, directly in issues would cover those matters which are which there is an element of certainty, and substantially will be those matters which fall short of certainty. Can we say 100% certainty that is directly and little less than 100%, 96, 97% that is substantially? Yes, sir. So, say for example, A files a suit for recovery of money advanced by him for principal amount 2 lakh rupee. He also prayed for relief. The suit was disposed of by passing a decree in favor of A to the sum of principal amount. Inadvertently, there has been no order as to the interest. A brings a subsequent suit and he files also a suit for declaration, for a declaratory decree that he is entitled to interest, and as a consequential relief he seeks allowance of the interest at the rate of 18% per annum. Whether subsequent suit is maintainable or not maintainable. The subsequent suit will not be maintainable. So what should have been remedy available to A? You should have raised that in the former suit. No, he claimed interest, but court did not grant interest. आंसर बताऊंगा तो हंसोगे। अपील नहीं करना चाहिए इंटरेस्ट के पॉइंट पे? कर सकता है, अपील करेगा कि सब्सिक्वेंट सूट लाएगा? अपील करेगा सर। और Subsequent suit मानेगा। हाँ, और अपील नहीं किया तो आपका हिट बाई कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा। यस सर। हाँ, तो है सिंपल आंसर या नहीं है? हाँ, मतलब दिस इज जस्ट एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। नहीं सर, ठीक है। ये जो रेज जुडिकाटा है, इट इज प्रोसीजरल एस्पेक्ट और सब्सटेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द लॉ। प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल है,
हाँ प्रोसीजरल मैटर में डिटर्मिनेशन पे क्या रेस जुडिकाटा लागू होगा कि नहीं होगा? सब हो सकता है, नहीं नहीं होगा सर, नहीं होगा। यस, प्रोसीजरल में नहीं होगा, सब्सटैंटिव मैटर पे होगा, सिंस रेस जुडिकाटा is related to domain of procedure, and if a decree is passed because defendant did not raise the plea of res judicata, and subsequent suit is also decided, so whether that decree contrary to the principle of res judicata can be executed or not, or decree becomes without jurisdiction and void. So I think it can be executed. Yes. If party waives its right to raise objection with regard to res judicata, then estoppel applies upon the party. Subsequently, if case is decided against that party cannot now claim the plea of res judicata. So, plea of res judicata can be waived. Yes sir. जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा तो बहुत ही सिंपल है। यूपी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन का केस याद है? वो टिकवानी का बहुत हॉट फेवरेट केस है, दिया हुआ है, वो देख लेना। अगर मान लो कि फॉर्मर सूट में देयर इज ए फाइंडिंग नॉट अपॉन द मैटर ऑन इशू, there is a finding into the previous suit not upon the matter in issue, so whether such finding will operate as res judicata or not? No sir. Why? Because into previous suit finding has to be upon matter on issue. Since it is a finding not on matter on issue, so it will not operate as res judicata. Very true. For the purposes of res judicata, formal suit किसे कहते हैं? The suit which was formally instituted or what? Sir, explanation 1 कहते हैं section 11 का कि formal suit वैसा suit होगा which has been previously decided Yes. by the court. और सेक्शन 10 के लिए कौन सा होगा फॉर्मेट सूट? The previously instituted suit होगा section 10 करेक्ट ओवर। ये मुझे पता है कि यू नो दिस एंड यू कैन आंसर इट वेरी वेल, इसलिए उसको कैन रेस जुडिकाटा अप्लाई बिटवीन को डिफेंडेंट, Yes sir. बिटवीन को प्लेंटिफ? Yes sir. हाँ। व्हाट इज प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट? Sir, pro forma defendant is such defendant against whom no relief has been claimed. What is difference between necessary party and proper party? The necessary party will be one against whom the relief is claimed, and his presence, and without his presence, no effective decree can be passed. Yes, correct. So, and what do you mean by proper party? Proper party would be those persons whose presence is not required, but just enables the court to adjudicate the matter effectively and properly. अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन बेस्ड।
सो Yes, प्रोफॉर्म सो देयरफॉर तो कह दिया तो आंसर ही मिल गया, दे दिया. इट बिकम्स नाउ ए लीडिंग क्वेश्चन बिकॉज चलो एनीवे मैं विड्रॉ करते हुए दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ. प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट इज ए नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी? प्रॉपर पार्टी होना चाहिए. हाँ, यस यस एग्जैक्टली यस. रिप्रेजेंटेटिव सूट में रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है या नहीं अप्लाई होता? होता है सर. एक्सप्लेनेशन? 6. यस 6. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है या नहीं होता? सर पर ब्रैकेट तकवानी को तो था कि हो सकता है. होता है बिकॉज there is a adjudication upon that very matter and that is होता है अप्लाई होता but better would have been a stray decisis stand by decided cases. ये नाउ रेस जुडिकाटा से संबंधित हमने कॉपी में नोट डाउन किया हुआ है सारे क्वेश्चंस. If a matter has not been heard properly, Yes sir. will that operate as res judicata? It will not operate as res judicata. क्या res judicata के लिए फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड? फाइनली क्यों लिख दिया गया? केवल हर्ड एंड डिसाइडेड लिखा होता. If some matter on issue has not been heard, it cannot be said to be decided. If some issue has not been heard, that issue cannot operate as res judicata. नोट कर लो इसको. एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है या नहीं होता? होता है सर. टैक्सेशन मैटर में रेस जुडिकाटा अप्लाई होता नहीं होता? टैक्सेशन सर. हाँ सर शायद होगा. कैसे होगा भाई? ये डिस्टिंक्ट सेपरेट होता. फाइनेंशियल ईयर होता है इसमें. अच्छा हाँ फाइनेंशियल में तो अगर टाइम अलग हो जाएगा. हाँ नोट डाउन. कॉज ऑफ एक्शन भी अलग होता. टैक्सेशन मैटर में रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करता. Yes sir. Why res judicata is applicable into public interest litigation? अगर res judicata फॉर एग्जाम्पल PIL में एप्लीकेबल नहीं होता तो एवरी मेंबर ऑफ द पब्लिक पिटीशन एंड ऑफ लिटिगेशन कैसे होता? व्हाट इज द पर्पस ऑफ res judicata? To continue litigation or to bring an end to the litigation? To put an end to litigation. तो PIL में अगर रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई होगा तो कल तुमने PIL किया डिसमिस हो गया, परसों हमने कर दिया, तो इसे लिटिगेशन का एंड होता? रेस जुडिकाटा अब पूछा जाएगा. अब देखो परफेक्ट आंसर कैसे दिया जाता है. एक तो उन्होंने पूछा कि रेस जुडिकाटा PIL में लागू होता कि नहीं? सर नहीं लागू होता. ये बहुत के केस बता दिए. दूसरा आंसर, सर रेस जुडिकाटा इज नॉट रेस जुडिकाटा इज एप्लीकेबल इनटू PIL. हमने शायद स्लिप ऑफ टंग इसे जस्ट PIL में भी रेस जुडिकाटा लागू होता है.
शायद स्लिप ऑफ टंग से कुछ हम अभी क्या बोला था मैंने, रे जुडिकाटा अप्लाइज इनटू पीआईएल, क्या ये बोल दिया था डज नॉट अप्लाई, क्या बोला था अभी तुरंत? डज नॉट नहीं कहा था। चलो एनीवे मिस माइंड, चूंकि अब हमारी नजरें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं कैसे मतलब वर्कआउट करके, मतलब आई एम टेकिंग नोट ऑफ टू मेनी थिंग्स, तो इसलिए मैं भी स्लिप ऑफ टंग। ultimately I am also a human being, maybe some error. So res judicata applies into public interest litigation because purpose of the res judicata is to bring an end to the litigation. If res judicata is made inapplicable into PIL, then there will be no end of the litigation. क्या ये लॉजिक कैसा? परफेक्ट है सर। हाँ, तो यही मतलब अब दिस इज द परफेक्ट एंड एक्सेलेंट। देखो सबों ने मेंस क्वालिफाई किया, सारे अच्छे स्टूडेंट हैं, कोई खामोश नहीं रहेगा, हर कोई जानता है। अब व्हाट इज द डिफरेंस कि आपकी फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी कैसी है और आपका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कैसा है, दैट मेक्स ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। इसी कारण से किसी को 35 से कम आ जाता और किसी को बहुत शानदार नंबर आता। सोशल मीडिया पे बकवास का दौर शुरू हो जाता है कि हमारे तो ऐसे थे, तो मैं खैर एनीवे उस टॉपिक पे मैं नहीं बोलूंगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में रे जुडिकाटा लगता है या नहीं लगता, एक्सेप्ट हैबियस कॉर्पस, रे जुडिकाटा इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अगर लिटिगेशन का एंड करना है तो व्हाई शुड नॉट दिस बी एक्सटेंडेड टू क्रिमिनल लिटिगेशन, इट हैज टू बी। हमने आपके और व्हाट इज टू फेस एक्यूट टू फेस कन्विक्ट, कैन दैट बी टेकन एज रे जुडिकाटा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रे जुडिकाटा और नॉट? Person once acquitted or convicted be not prosecuted and punished for the same offense again. सेम ऑफेंस वहां क्या हो जाता, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। मैं जैसे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं समझाने के पर्पज से। to first acute section 300 CRPC double jeopardy is not that based upon why one should not be jeopardized again, because there has to bring an end to the litigation. So once acquitted or once convicted, there has been adjudication, there has been decision of the court. So res judicata is principle of universal application and it is also applicable into criminal matters except habeas corpus. habeas corpus में इसलिए अप्लाई नहीं करता because each and every hour of delay in jail gives rise of fresh cause of action. So the res judicata is inapplicable into habeas corpus petition. रिट पिटीशन में लगेगा कि नहीं लगेगा res judicata? लगता है एक्सेप्ट हेबियस कॉर्पस। हाँ, रिट पीआईएल में लगता है तो रिट में क्यों नहीं होगा? यस सर। और डिसमिसल इन डिफॉल्ट में res judicata लगेगा नहीं लगेगा? Dismissal in default is that a decision finally heard decided on merit. तो फेदर तो डिसमिसल इन डिफॉल्ट में res judicata लगेगा या नहीं लगेगा, सोच के बताइए। नहीं लगेगा सर। डिसमिसल इन लिमिनी, व्हाट इज डिसमिसल इन लिमिनी? कल आपने बताया था इसके बारे में। डिसमिसल विदाउट इश्यूएंस ऑफ नोटिस, नोट डाउन करो, कल बताया था वहां इंटरव्यू में, भूल जाओ तो नोट इट डाउन। तो डिसमिसल इन लिमिनी में res judicata अप्लाई होगा या नहीं होगा?
नहीं होगा सर। नहीं, बिकॉज मैटर हैज नॉट बीन हर्ड। हियरिंग एक तरफा नहीं होती, जब दोनों पार्टी आएंगे तब हियरिंग होगी। एक्स पार्टी डिक्री में रेज जुडिकाटा अप्लाई होता है या नहीं होता? होता है सर। हाँ। कंप्रोमाइज डिक्री में रेज जुडिकाटा अप्लाई होता है या नहीं होता? नहीं होता है सर। Because into compromise decree it is not, there is no adjudication. हाँ Court has only recorded the terms of the compromise between the party. तो उसमें एडजुडिकेशन तो हुआ नहीं। यस सर। तो कंप्रोमाइज डिक्री में रे जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। एरोनियस डिसीजन में रे जुडिकाटा अप्लाई होता है या नहीं होता? होना चाहिए सर। हाँ। whatever decision of the court, अगर डिसीजन एरोनियस है तो गो इनटू द अपील। डिसीजन में भी राइट और रॉन्ग, द ओनली थिंग इज द राइट लिटिगेटेड must have been adjudicated. Even if it has been adjudicated erroneously, it will invoke the principle of res judicata. इंट्रीम ऑर्डर में रेज जुडिकाटा अप्लाई होता है या नहीं? नहीं होना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि वो और उसमें ये कहाँ होता है, हर्ड राइट्स ऑफ पार्टीज कहाँ फाइनली डिसाइड होता है। Interim order, if there is an adjudication into the interim order affecting the rights of the parties, then res judicata, interim orders में res judicata is applicable. A decision into the interim order binds the parties, and principle of res judicata can be applied. अब next question, what is exactly difference between res sub judice and res judicata? Sir, res sub judice is concerned with the former suit. Previously, res sub judice. रिलैक्स हो जाओ, फिर बताना। पहला डिफरेंस ये है कि रेस सब जुडिस आपका प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट के लिए कंसर्न में रॉन्ग दिशा में जा रहे हो। दिस इज रेस सब जुडिस में देयर इज नो एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन हैज टू कम, therefore subsequent suit is estate. और रेस जुडिकाटा में देयर हैज बीन प्रीवियस एडजुडिकेशन। ये कहना सही है गलत है? यही तो मेन डिफरेंस। मेन डिफरेंस को फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेन जो डिफरेंस है उसको लास्ट में बोलोगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ऊपर रखोगे या उसको लास्ट में लिखोगे? फर्स्ट में रखना चाहिए। हाँ, तो रेस सब जुडिस में देयर इज नो एडजुडिकेशन and res judicata में there has been a previous adjudication. This is the main difference. और बाकी वो एकेडमिक वाला डिफरेंस है कि वो सेक्शन 10 में है, वो सेक्शन 11 मेंस के पर्पस वगैरह से। तो मेन डिफरेंस वन लाइनर इज दिस डिफरेंस। जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, कैन फॉरेन जजमेंट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा? Yes, sir. Yes, correct. Section 30 में ही है। हाँ। अब the next important aspect by which question has been asked into previous interview,
may be asked this time, suit by or against government. What is section 80 CPC? Section 80 deals with notice. It states that if any suit has to be instituted against the government or a public officer, then 2 months notice will have to be given. और उसमें हाँ हाँ ठीक है, नो सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट can be filed until expiration of 2 months next after notice in writing stating the cause of action. और क्या बोलेंगे? The name, description and place of residence of plaintiff and the relief claim. 3 चीजें. तो क्या ये जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट 2 month नोटिस का, कैन इट बी वेब्ड इन अर्जेंट केसेस? Yes, sir. Subsection 2 में उसका exception है. हाँ, that can be waived. इंटरप्लीडेड सूट हम लोगों ने किया था या नहीं किया था? सर पूछा था आपने इससे पहले एक बार. हाँ, तो उससे नहीं और ज्यादा पूछा जाएगा. अपील, अब वो जमाने लद गया कि अपील नेचुरल राइट है कि इनहेरेंट राइट है कि लीगल राइट है. व्हाई वी हैव सिस्टम ऑफ अपील? आपके सर कोई जो एरर हुआ है अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि राइट वंस एडजुडिकेटेड cannot be re-agitated and is hit by res judicata. So right once adjudicated, if we have res judicata, that it cannot be re-agitated, so why we re-agitate the right once adjudicated into the appeal? मतलब रे जुडिकाटा कहता है कि टू ब्रिंग एन एंड टू द लिटिगेशन, राइट वंस एडजुडिकेटेड कैन नॉट बी री एजिटेटेड. तो ये बात अपील पे क्यों नहीं लागू होती है कि राइट वंस एडजुडिकेटेड एंड वी हैव टू ब्रिंग एन एंड टू द लिटिगेशन. If we are taking it into the appeal, again there would be a litigation into the appeal. So how there has come an end to the litigation? On what principles appeal is founded? Difficult question है. नहीं, डिफिकल्ट नहीं है. पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा तो हंसोगे. कई बार पढ़ा भी होगा, मेंस में लिखा भी होगा. तो बहुत ही दिस इज बहुत ही इजी क्वेश्चन. बिकॉज सी रे जुडिकाटा भी उन्हीं सिद्धांतों पे है कि राइट वंस एडजुडिकेटेड कैन नॉट बी री एजिटेटेड. अब नाउ court is also presided by a human being. Whether adjudication is erroneous or not, that has to be reaffirmed by the superior court. Therefore, we have the system of appeal. Can we guarantee that human mind shall never commit error? An erroneous decision is serious. An erroneous decision is serious injustice, and it cannot be undone, and it can never be undone. An erroneous decision is virtually miscarriage of justice, which can never be undone.